25 रु 45 वर्ष मध्यरे हेउछंती अधिक आक्रांत। प्रतिदिन 900 रु अधिक व्यक्तिंक होउची डेथ। प्रति गोटे मिनिट रे 4 जन को हेउची शिकार। मुंबई रा मार्शल आर्ट चैंपियन मोहित शर्मा टूर्नामेंट खेलुथिला बेले हार्ट अटैक रे डेथ। सेते बेले तांकू केवल 21 वर्ष होइतिला। कोलकातार 26 वर्षीय युवती ऑफिस रे काम करुथुबा बेले सडन डेथ समस्त को आश्चर्य करिथिला। इंदौर रे गोटी बाहाघर रे नाचिथुबा बेले 23 वर्षीय युवतींकर हार्ट अटैक रे डेथ। अथवा गुजरात रे 28 वर्षीय क्रिकेटर बैटिंग करुथिला बेले चौका मारिबार 1 मिनिट परे हार्ट अटैक रे क्रीज उपरे टळी पड़िले। केवल सेतिकी नुहे, सिद्धार्थ शुक्ला, शेफाली जरीवाला, पुनीत राजकुमार, केकेंको भली अनेक सेलिब्रिटी हार्ट अटैक रे सडन डेथ न्यूज परे आमे निश्चिंत भावरे आम हार्ट को हेल्दी रखिबा पई चेष्टा आरंभ करिबा उचित। Sounds disturbing, right? आउ यही सब न्यूज़ जोड़ाक मुझे डिस्कस करी से गुड़िक आमको क्वेश्चन करुच्ची आमर बिलीफ सिस्टम जे केवल ओल्ड एज रे ही हार्ट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हुए किंबा डिजीजेस बाहर। तो यंग एज रे भी आजिकल डिजीजेस बहुत बहुत रैम्पेंटली देखा मिलूँ, बहुत कॉमनली देखा मिलूँ। तो या प्रिवेंट केमती करवा से गुड़िक विषय रे आमर सिंपल क्वेश्चंस किंबा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आंसर करने लगी आम सांगे अच्छा मोस्ट रेनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर महेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। नमस्कार सर। नमस्कार। सो केतरा क्वेश्चन पचारि वर्ल्ड हार्ट डे अनुजाई केतरा क्वेश्चंस आमर हार्ट हेल्थ विषय रे आमे जानिबा आज। सो सर आपण मते कहंतु कि आपण निजर हार्ट हेल्थ पई कोन करंती फॉर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ योर कार्डियक हेल्थ? ओ एक्चुअली हेल्दी हार्ट विषय जानिया पई तब सेट के प्रीएम्बल रे जानिया पड़िबो। हेल्दी हार्ट means healthy heart diet 1, number 2 exercise. The recommendation of exercise 150 minute moderate to severe intensity exercise per week kimba 90 minutes of intense physical activity per week. It may 5 दिन सप्ताह 5 दिन enough. 2, tobacco use in any form and awareness of early detection diabetes blood pressure एवं sedentary lifestyle ये सब जिनस गुड़िक हूँ इंडियन पर्टिकुलर एशियन मानकर यहाँ हूँ भेरी कमन से लगी ये सब जी गुड़िक कहली से गुड़िक मुझे किसी मात्रा पालन कै। आजिकल आमर यूथ मासेस रे कार्डियक इश्यूज हार्ट अटैक्स तार अकरेन्स बहुत स्पीडीली बढ़ुची, बहुत रैम्पेंट अच्छी। तो यार कॉजेस कौन सर को जिनस को आपण ब्लेम करेंगे एगुड़ाक रिपीटेडली अकर कर एत फ्रिक्वेंटली हबार? आमर जी स्टडी अच्छी से स्टडी अनुसार आमर कोरोनरी डिजीज रक्त कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक है हार्ट अटैक एवं रिलेटेड डिजीज गुड़िक 10 वर्ष अर्लियर अमेरिकन किंबा यूरोपियन काउंटर पार्ट हुए। आर कारण जदिव इंडिया रे विशेष स्टडी है किंतु जेतिक स्टडी है नंबर 1 कॉज इज sedentary lifestyle number 1, number 2 extensive use of tobacco, 3 very high incidence of diabetes, and 4th is stress in life, and taking unhealthy diet and some genetic factors which is not yet known. किंतु ये सबुड़ मिसई देले आमर जो कोरोनरी डिजीजटा एशियन पर्टिकुलर साउथ ईस्ट एशियन मानकर 10 वर्ष अर्लियर होची। आधे मोस्टली आम सबुड़ को सबसेट सबुड़ एनालिसिस करवा इट इज डाइट यूज ऑफ टोबाको and sedentary lifestyle, high incidence of diabetes and unhealthy dietary habits एगुड़िक आस प्रमुख कारण। सर टिके स्मॉल डिटेल्स को जिबा कि टोबैको केमिति डायरेक्टली ए टाइप रो इश्यूज को बेसी बढ़ावा दोची माने बढ़े केमिति दोची जिंसटा को आपण जति जिबे जति कोरोनरी डिजीज रो कारण होची एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस कोरोनरी आर्टरी जोटा अछि तार डिफरेंट एनाटॉमी अछि intima, media and adventitia अच्छी। So any injury to the endothelium जोटा inner lumen जोटा अच्छी हार्ट आर्टरी रो
सेटा जदि कौनसी कारणरू जदि डैमेज हुए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज हम देन सेठी कोलेस्ट्रॉल अक्युमुलेशन हम से कोलेस्ट्रॉल अक्युमुलेशन ग्रेजुअली बॉडी कर गोटे प्लेक तैयारी करिवो ए जो आपण जो कहले tobacco compositions are thousands, right, so I won't go into detail that, but what it does, it goes and injures the endothelial cells, right, that is called a chemical injury. Once there is an injury or disruption of the endothelium, then the harmful substance जोड़ा अच्छे blood रे सेटा endothelium media भितर जीवो. Once they go into that place, they start the process of atherosclerosis. right. So आमर यूथ मासेस बहुत थर रिलैक्सेशन पाई स्मोकिंग भले हैबिट्स डेवलप करंती जेबे कि इट इज मोर इंजुरियस देन डू एनी गुड. स्लीप रो किछि लिंक अछि कि कार्डियक अरेस्ट संगे रे? Yes. So you say a healthy adult, the sleep will be beside the elderly patients or in child. The sleep period is 6 hours or minimum 6 hours of a good sleep. Right. So there are different types of sleep, NERM, that I won't tell. But if that sleep is hampered, the sleep is not of good quality, one. Number two, if the sleep is hampered by snoring, what you call OSA, so in those cases, these people are susceptible for coronary artery disease and several psychosocial disorders. Right. सर स्नोरिंग जो इश्यूटा आपण कहले सेटा हमर जस्ट हमर ले पर्सन व्यूअर्स मानकर अंडरस्टैंडिंग पाई स्नोरिंग टा केमिति ग्रेजुअली कंट्रीब्यूट करे हार्ट हेल्थ को? So you say normally if somebody is suppose sleeping, there is no obstruction. Obstructed sleep apnea means there is obstruction in the upper airways. Okay. If there is obstruction in the upper airway means upon trachea and up to the mouth level. Tongue fall back or more of fat tissue in the your throat. So that when the patient or person is asleep, everything is relaxed, so tongue falls. Okay. Once it falls, it obstructs the airways. So during inspiration, there is problem. Enough of oxygen doesn't go inside. Absolutely. And patient doesn't also exhale correctly. So that leads to carbon dioxide retention and low of oxygen. Resulting in snoring. Yeah. So that what you call is a type 2 respiratory failure situation. And once this remains for long time, if you observe somebody at your home, snoring house, you'll see their sleep is totally disturbed. They will be just एकड़कू सेकड़कू उठुवे बसुवे बसिक उठी एमती होते एणु तेणु कथा गपसप कथबार्ता कर फिर शो पड़े फिर घंटे पर फिर उठे. सो दिस इज नॉट इन देयर नॉलेज. राइट. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ OSA, that is retention of carbon dioxide. This is a type of respiratory failure which happens time to time during the sleeping period. So on that note sir, किछि एमती सुपर फूड्स अछि किबा किछि मिथ्स अछि कि डाइटरी मिथ्स कि किछि फूड ग्रुप्स कैंसल आउट कर देले हमरा हार्ट अटैक्स की कार्डियक प्रॉब्लम किछि हबनी? देखो there is a lot of myths in cardiology and other also disciplines. So truth is always truth. For example, गोटे small example देबी. ब्लड प्रेशर मापिबे, ब्लड प्रेशर अधिका कहबे केबे औषध खाइबे. फर्स्ट क्वेश्चन तांगर हो जे मोर तो किछि असुविधा नहीं, ब्लड प्रेशर कोन औषध खाइबे. किंतु ट्रुथ होची ब्लड प्रेशर जो थाई थिबो ब्लड प्रेशर अधिका है कि तार सिम्पटम्स नहीं. सिम्पटम हेला माने गोटे कॉम्प्लिकेशन लाइक renal failure, heart failure, stroke, blindness. So सेतलको डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कले तार बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट लॉजेस टोटली. सो से भला सब गोटा बहुत मिथ अच्छे डाइट. मु खाली गोटे एग्जांपल देबी रिगार्डिंग ऑयल्स which has been prescribed by Lipid Association of India, LAIUTL. से कहूँ जे in Indian people, rice bran oil,
then sunflower oil, canola oil preferable, but one may use also amara sorish telo. Most important is quantity. Okay. One is it should be approximately 15 ml per day per head. ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଯେଉଁ କୁକିଂଟା ୱାନ୍ସ ୟୁ ବଏଲ୍ ଦ ଅଏଲ୍ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ଦ ଫୁଡ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ଅଛି ତେଲରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ସ. So the good oil after cooking or reusing it becomes a bad oil. Right. So it has no meaning. ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ତ you cannot use always the new oil for the cooking, no? Same maybe leftovers ସେଟା ଫେର ୟୁଜ୍ ହେବ ନା. Absolutely, sir. On that note, regarding the diet, ketata blogs and posts I have read about just having 1 tablespoon of a particular type of oil. Say olive oil ho, almond oil ho. Are these myths or they genuinely help with maintaining good heart health? No, it is total myth. Similarly, ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଆ ଘିଅ ନିଅନ୍ତୁ. ଗୁଆ ଘିଅ ନେଲେ କିଛି ହେବନି. it is safe, there is no atherosclerosis. That is not correct. ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପଲି unsaturated fatty acid ଭଲ ବେଶୀ ଅଛି, that oil is good. Saturated fatty acid ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକା ଅଛି କିମ୍ବା trans fatty acid ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ଅଛି, that is not good. Because once you take trans fatty acids or ଆପଣ ନେଲେ saturated fatty acid, ସେଟା directly converted to LDL cholesterol को. Absolutely. LDL cholesterol ହେଲେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ନା. So ସେଇଭଳିଆ ବି କେତେଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି. There is also scientific studies also, but there is not ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି and also at times refuted. ଯେମିତି କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଖାଆନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେରଳରେ ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଫ୍ ୟୁ ସି କେରଳରେ ଭେରି ହାଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋରୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍. Yes. କିନ୍ତୁ ପିପୁଲ୍ ସେ ୟୁ ଟେକ୍, वी आर टेकिंग नथिंग हैपेंस. सो दिज आर ऑल मिस. On that note, sir, ଆମର ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଏମାନଙ୍କର ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ରେଟ୍ସ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜେସରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି କି ଓଡ଼ିଶା ହଉ କି ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପେସିଫିକ୍, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇନସାଇଟ୍ସ ଦେଇପାରିବେ? I'll tell in general and particularly in developing countries. ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଅଛି ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍, particularly ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କୋରୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍. ଓକେ. So menopause पर्यंत maybe 45, 50 years, if the estrogen level is high, cycles यदि सेमानकर ठीक होची, the chances of coronary disease बहुत कम. Okay. किंतु once menopause है गले, post menopause estrogen level कमी गला, the ladies माने हो, स्त्री लोग माने हो तो सेमाने they are particularly susceptible. सेमाने कोरोनरी डिजीज इन्सिडेंस बहुत बढ़ी जाए. यदि आप देखिए 65 इयर्स से यदि कंपेयर करेंगे मेल एंड फीमेल, 65 इयर्स स्त्री लोक मान को कोरोनरी डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज अधिक मात्रा रह जाए. ओके. बिकॉज वंस द ट्रांजिशन इज ओवर, द चांसेस ऑफ गेटिंग यही सब जिन हबार चांस बहुत बेसी हो जाए, कारण एस्ट्रोजन इज ए प्रोटेक्टिव हार्मोन. ओके. ये गोटे इम्पोर्टेंट कारण. आउ जो सोशल रिजन्स जोड़ा अच्छी वुमेन मानकर देखिए पर्टिकुलर आम जो देखो से कंप्लेंट गुड़ाक यूजुअली नॉट डिजीज स्पेसिफिक, भेग ये पेन हो पेन हो चलले हो बसिले हो शोले हो. सो इट डजंट फिट टू एनी पर्टिकुलर डिजीज. ये फिट न कले कन्फ्यूजन हाँ होता है ना हो पारे ये औषध खाऊ देखा. सो दैट एग्रेसिवनेस ऑफ डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग सेटा नहीं. सर दिस इज वर्ल्ड वाइड डिफ्यूज से गोटे जो कंप्लेंटा करेंगे यहाँ सागे पेट मिसईदे, पेट गोड़ आंठू, तो कौटा एक्चुअल डिजीज सी गोटे. सो डिजीज डायग्नोसिस लेट हुए, डिजीज ट्रिटमेंट लेट हुए, आउटकम भी लेट हुए. सो से देखिए लेडीज मानकर यदि कोरोना डिजीज हो, it is usually diagnosed late,
treatment is given late, and outcome mortality मृत्यु संख्या morbidity बहुत high in compare करो male counterpart. This is all over world. किंतु सर देखा मिलूँ आजिकल इनसीडेंट्स रेट्स रे कि विमेन मानकर इवन इफ दे आर अंडरगोइंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकल्स सेते बेले भी दे आर डेवलपिंग हाइपरटेंशन तापरे आल्सो समटाइम्स हार्ट डिजीजेस तो याकू आपण को जिंस को हमें ब्लेम करबा या पई दैट विल कवर. सो जो कॉमन रिस्क फैक्टर जोड़ा मैं आपको आगुर कही सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, हाई इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज. प्रेगनेंसी पीरियड रे दीटा तीन टा स्पेसिफिक डिजीज अच्छी जोटा प्रिडिस्पोज करे कोरोनरी डिजीज. गोटा हूँ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस. आउ गोटे डिजीज अच्छी जो हार्ट मसल फंक्शन कम जाए से कहते पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी. ये जो दीटा जो डिजीज रहा तार इनसीडेंस अप्रोक्सीमेटली मे बी 5 to 10%. तार इनसीडेंसटा बढ़ी जिते प्रेगनेंसी लेट हम. लेट मीन्स आफ्टर एज ऑफ 35. ओके ये सब प्रेगनेंसी एसोसिएटेड हाइपरटेंशन के डायबिटीजटा बेसी मात्रा हो गले तो चांसेस ऑफ cardiovascular disease developing during pregnancy and after pregnancy is high. So जो अपन जो क्वेश्चन पचारे ये जो रिस्क फैक्टर जोटा रहा ता सहित प्रेगनेंसी एसोसिएटेड फैक्टर्स मिसीगला. सो सम ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन दे आर प्रिडिस्पोज टू दिस डिजीज. किंतु अपन दे कंपेयर कर मेल काउंटरपार्ट इज डेफिनेटली मच लोअर. ओके सर. सो कमिंग टू मेल्स नाउ किछि एमती अर्ली इंडिकेशंस अच्छी लाइक जमती इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत प्रोमिनेंट है गलानी वे यंग मेल्स रे भी. इज दैट अ प्रीडिस्पोजर टू हार्ट डिजीजेस? That is very important question. Because as you know diabetes incidence बढ़ी गला, hypertension incidence बढ़ी गला, stress in life बढ़ी गला, alcohol consumption बढ़ी गला, tobacco बढ़ी गला. ये सब पांचटा जिनस दे give rise to erectile dysfunction. One, medicine जोड़ा निया जाए for hypertension, for diabetes, many of them they cause also erectile dysfunction. So a situation, this is a very important problem. So that solution is control blood pressure करो, diabetes control करो, औषध संख्या कम करो. That is not practically possible. और कीप योरसेल्फ हैप्पी केमती हम हेनी मत रोग एत गुड़ा रोग अच्छे कौन हैप्पी कौन हेबी तादे स्ट्रेस इन वर्किंग प्लेस, स्ट्रेस इन फैमिली, इन एट होम कौन हैप्पीनेस आसो. सो व्हाट दे डू ओवर द काउंटर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो मेडिकेशंस अवेलेबल होची फॉस्फोडाइएस्टेज 5 इनहिबिटर्स, सिल्डेनाफिल एंड अदर ग्रुप्स, देयर इज अ लॉट ऑफ मिसयूज. वाइग्रा मिसयूज. सो इट हैज सेट अप सिल्डेनाफिल ट्रेनमेंट composition sildenafil is over the counter medicines. So many people they misuse. ये औषधर प्रॉब्लम होची because vasodilatation नहीं गले intense headache करी होबो, blurring of vision होबो, negative जिन सोडा कोच में blurring of vision होबो, कान मुँह नाल है जो मानकर कोरोनरी डिजीज थी कोरोनरी सर्कुलेशन कम हो स्टिलिंग हो ब्लड सर्कुलेशन बाहर को पलि आसला हार्ट को कम है. देयर आर मेनी इंस्टांसेस नॉट इंस्टांसेस मेनी रिपोर्ट्स एंड ट्रायल्स जो देखा ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी हु हैव कंज्यूम्ड दिस मेडिकेशंस दे आर डेड. यू फाइंड मेनी ऑफ देम दे आर टेकन दिस टाइप ऑफ मेडिकेशन कारण ये मेडिसिन काम होची इंटेंस vasodilatation जो उनका कोरोनरी आर्टरीज नैरोइंग थी ब्लड फ्लो कम हो दैट विल प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई बहुत आम बहुत लोक को काउंसिल करूँ नो फर्स्ट यू रूल आउट यू डोंट हैव ए कोरोनरी डिजीज यू टेक नो प्रॉब्लम. सुपरवाइज्ड वे सुपरवाइज. सो सेटा तो होनी. सो दिस इज मिस यूटिलाइजेशन जो मान ब्लड प्रेशर अच्छी कि नहीं जानना से भी खाऊँ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज अच्छी कि नहीं से भी जानना खाऊँ. जो मानकर ये दुईटी अच्छी जिनस दे मे लैंड इन प्रॉब्लम लाइक दिस and usually it is a sudden death or a heart attack or arrhythmia. Okay. So coming
टू दैट पार्ट कि बहुत लोग काफ़ी टाइम रे फिट थांती तांकर मे बी 1 or 2 बैड हैबिट्स थाई पारे एंड दे आर मे बी ऑन द स्पॉट माने स्टेज रे थिबे कि किछु गोटे परफॉर्मेंस होतवे ता मझरे दे गेट अ कार्डियक अरेस्ट तो एटा को केसेस रे देखिवा को मिले फिट थाई कि भी केमती ए टाइप रो इश्यूज देखिवा को मिले केतोड़ी को डिजीज अच्छी हार्ट डिजीज अच्छी जो थे आम जोटा को सडन कार्डियक डेथ हुए ओके फॉर एग्जांपल जब देखिए माराथन रनर्स फुटबॉल खिलाड़ी दे आर फिट यू फाइंड दे आर प्लेइंग सडनली दे विल ड्रॉप डाउन डेड राइट सो दैट इज कॉल्ड ये कहते हैं सडन कार्डियक डेथ इन यंग अपरेंटली हेल्दी पीपल केमती होची देयर आर मेनी कजेस खाली तीनटी जिनस कहबी गोटे होची कहते हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हार्ट मसलटा हेरिटेड डिजीजटा हार्ट मसलटा मोटा होता है से किसी असुविधा हो टे दौड़े टे धईसी कौन लगुव से जब इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करेंगे सडनली ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन कमिज ड्रॉप डाउन डेड एवं हार्ट को रक्त संचालन कमिज आनंद ग्रुप हो जो मानकर हेरिटेरी आर्दिमिया से आपंकर डिफिकल्ट हो चैनलोपैथी बोली आम कहू आम टर्म रे से भाया डिजीज थे ड्यूरिंग प्ले they will have sudden death. Even very small kids also they will die suddenly while playing. Okay. So एगुड़िक जदिव आमर स्क्रीनिंग ऑफ दिस डिजीजेस फॉर द प्रेजेंट टाइम इज डिफिकल्ट कहीं यू कैन स्क्रीन फ्रॉम द चाइल्डहुड डूइंग ECG इको एंड इट नॉट पॉसिबल बट व्हेन जदि गोटे स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री अच्छी ऑफ सडन डेथ आई थिंक दे शुड बी स्क्रीन ECG or a small thing ECG or echo may detect early you may अपन ट्रीटमेंट दे पारे कि प्रिवेंट करेंगे ओके कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को जीवनी दैट्स इट सो गोटे बहुत प्रोमिनेंट इनफॉरमेशन ये रोचे दैट फैमिली हिस्ट्री जदि अच्छी ताहले बहुत अर्ली एज रू भी स्क्रीनिंग टा गोटे बहुत इंपोर्टेंट प्रिवेंटिव हिसाब रे काम करिवो एंड जतबेले स्क्रीनिंग रे हमको किछि भी इरेगुलारिटी दिसुची we should take supervision from as early as possible in time. Correct. Right? So on that note sir आपण किछि एमती स्क्रीनिंग प्रोमिनेंट स्क्रीनिंग टेस्ट्स रेकमेंड करिवे जो मानन को रेगुलरली या फिर जदि लेट्स से 35 क्रॉस कर लेनी कि 40 क्रॉस कर लेनी दे शुड अंडरगो दीज टेस्ट्स टिके फ्रीक्वेंटली कि बा केते फ्रीक्वेंटली से माने करबा कथा सेटा भी जदि सजेस्ट करिवे वेरी इंपोर्टेंट आमरो वेस्टर्न जोटा वी फॉलो 2 गाइडलाइंस वन इज अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन and the European Society of Cardiology ए दुईटा गाइडलाइन आम फॉलो जेहेतु आमर गाइडलाइन गुड़िक से स्ट्रंग नुहे केतोड़िक आसी क्वेश्चन होचे गाइडलाइन डायरेक्टेड रिकमेंडेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो बिकॉज इट बहुत कॉस्टली हो टे सो आम इंडिविजुअलाइज स्क्रीनिंग आम करूँ पर्टिकुलरली प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस माने होची मेल लेस देन 55 वुमेन लेस देन 65 इयर्स से यदि फैमिली हिस्ट्री अच्छी नंबर 1 क्राइटेरिया नंबर 2 फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपोलिपिडेमिया ये जो सबसेट रहा 5टी सबसेट से को डू स्क्रीनिंग वेरी अर्ली फ्रॉम 18 इयर्स ऑनवर्ड्स दिस इज एटा जोटा कहले आज रिगार्ड्स एथेरोस्क्लेरोसिस जो मानकर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी अच्छी सडन डेथ फैमिली हिस्ट्री अच्छी जो मानकर फैमिलियल एरिथमिया हेरिडिटरी एरिथमिया अच्छे जोड़ाक रेयर कंडीशंस बट वी सी आल्सो वेरी ओपन सो सही सब कंडीशन गुड़ाक द फैमिली स्क्रीनिंग बिकम्स वेरी इंपोर्टेंट वेरी अर्ली इन द लाइफ किंतु कोरोनरी डिजीज रे जदि ए सब जिनस अच्छी इट स्टार्ट्स फ्रॉम 18 वर्ष रु आरंभ हो ओके यदि फैमिली हिस्ट्री किछि नाही एवरीथिंग इज फाइन नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन नाही डायबिटीज नाही सडन कार्डियक डेथ नाही एससीबीडी आम कहूँ एससीबीडी एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज यदि नाही कि स्ट्रोक नाही ओके इट इज 40 at age of 40 routine investigation particular blood sugar and lipid profile these two are very important
बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल सर एटा आपण देले कहीं ना बहुत थर लोक मैंने इग्नोर करती फैमिली हिस्ट्री थिले भी जब निजको फिट रखुवे मे बी स्क्रीनिंग को एते माने ध्यान देवेनी एते इंपॉर्टेंट बोली भावेनी जेबे कि दिस बिकम्स अ बिग प्रिवेंटिव फॉर पीपल ऑन दैट नोट सर हाइपरटेंशन विषय आम बहुत गुड़े हाइलाइट्स तो आज करिचे लो ब्लड प्रेशर रे भी कार्डियक अरेस्ट हबार संभावना थाए कि पीपल हु हैव अ टेंडेंसी ऑफ लो This बीपी is a very difficult question because the trials गुड़िक अच्छी जो देखा जो मान लो ब्लड प्रेशर से लंजिविटी बेसी ओके लंजिविटी बेसी किंतु सिम्पटम्स बेसी सिम्पटम्स कौन ठिया हेले मुंड बुलेदेला पड़गला भाया लगे पड़गला सो इफ लो हाइपरटेंशन केतुक डेफिनेट कजेस अच्छी से गुड़िक जदि एक्सक्लूड हो गला इफ समबडी हैविंग ए जदि हो 90/70 100/70 आई थिंक नथिंग टू वरी अबाउट किंतु जदि सिम्पटम्स हो मुंड बुले दूँ पड़गला भाया लगुच देन यू हैव टू आमको खोजा पड़ो जे लो ब्लड प्रेशर पर जी कंडीशन अच्छी से एक्सक्लूड करता पड़ो जदि ना देन फॉरगेट अबाउट इट फिनिश सर बहुत गुड़े जिनस आज जाना पाइली कि आमर व्यूअर्स मानू कि क्लोजिंग नोट दबा चाहिए व्हेन इट कम्स टू द एटीट्यूड टुवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स coronary artery disease number one killer all over world including India से 80% जो डेथ किंबा मॉर्बिडिटी जोटा कहती सफरिंग 80% इज प्रिवेंटेबल आमर प्रॉब्लम होची पर्टिकुलरली इंडिया और साउथ एशिया डेवलपिंग कंट्री प्रिवेंशन एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाए ना रोग है आसिले हॉस्पिटल पशिले ट्रीटमेंट है कॉस्टली ट्रीटमेंट डेथ है कि भल हो गले कि कम्प्लिकेसन हो गले आमर हूँ मेडिकल साइंसटा यूँ आरंभ हो किंतु आप देखिए इट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इज पीपल एट रिस्क कौन रिस्क माने कौन फॉर एग्जाम्पल मोर जदि फैमिली हिस्ट्री बापा कि माँ कि ब्रदर कि सिस्टर हार्ट डिजीज अच्छी ब्लड प्रेशर अच्छी डायबिटीज अच्छी कोलेस्ट्रॉल अच्छी मोर रिस्क सो द इंटरवेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट at the risk level then it comes pre-disease before disease before blood pressure comes before diabetes of aguru cholesterol aguru it should be detected and prevented then disease if for example जदि डायबिटीज अच्छी ब्लड प्रेशर अच्छी जदि ताको adequately और optimally ट्रीटमेंट कराला नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन विल बी लिटिल डिलेड सो आम कौन आम अनफॉर्चुनेटली आम वी आर इन द स्टेज 4 स्टेज मैंने वी आर डिटेक्टिंग द डिजीज इन at the complication of the disease बॉडी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है सर so previous 3 जो important preventive जिनसटा that is already over so मोर रिक्वेस्ट रहिबो आमर वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन एवं वर्ल्ड हार्ट डे रे during this date 29th of September it is a day of लोक को जनाया पड़ो जे दे शुड बी अवेयर से जानवे सचेतन जे ब्लड प्रेशर डायबिटीज स्मोकिंग अनहेल्दी लाइफस्टाइल लैक ऑफ एक्सरसाइज एवं सीडेंटरी लाइफस्टाइल ये सब को मिसई देले 80% जब आम रोगटा प्रिवेंट कर कहीं किसी चेष्टा करवानी डिजीजटा होगला हॉस्पिटल को धाँ दाउड़ होकर आसवे फैमिली मेम्बर आसवे कांदे पैसा खर्च करेंगे अल्टीमेटली कौन हम वी डू नॉट नो किंतु वंस देयर इज अ डिजीज हियर मीन्स ये खाली गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहि हार्ट डिजीज रो क्योर नहीं इट इज वर्स देन कैंसर कैंसर ट्रीटमेंट कले क्योर हुए हार्ट डिजीज रो दैट इज नॉट देयर वंस ए हार्ट डिजीज इज ए लाइफ लॉन्ग हार्ट डिजीज एंड आउथर ओवर चांस इज ऑलवेज देयर इन नॉट दैट ट्रीटमेंट स्टेंटिंग होगला बाईपास सर्जरी होगला भाल्व लागला क्यों नो नो इज ऑल मिसकंसेप्शन at any moment there is a problem and once a disease is always a disease and you have to come to the hospital repeatedly if required so ये जो जिनसुड़ा का हमारा which is already everybody knows heart healthy diet
early recognition of blood pressure among diabetes, cessation or avoidance of tobacco in any form, and exercise. ये पांचटा जिनसक जदि करवा किछि मात्रा आम सक्सेसफुल हवा ना मत लगुच सब जिन स्ट्रेस लाइफ युड़क मोस्टली प्रिवेंटेबल कजेस जिते पारे जी संभव आम चेष्टा कले आम किसी डिजीज इनसीडेंस कम कर ना किसी रास्ता नहीं नो वे आउट excellent sir. So on that note sir, gote recent notion achi ebe world heart day ro, that is don't miss a beat. ei narrative ro artha kona sir? Amar every year 29th of September World Heart Day, this is on the occasion by the World Heart Federation eta palan kara jaye. So every year there is a theme. The theme usually it moves around preventive aspect of heart disease. Okay. So एथर जो अच्छी do not miss a beat. Miss mean heartbeat. जमती heartbeat टा सबल चलती from birth till death. Heartbeat टा सबल constantly कोटे 70, 52 or 60 to 90 rate चलती. That maintains life. So missing means if it stops, then problems. So that means अर्थ हूँ आम एटा को टू कीप ऑन कंटिन्यूइंग पिटिंग जतिक प्रिवेंटिव मेजर्स अच्छी से गुड़िक आमको पालन करवा ये गुड़िक ऑलमोस्ट जो लास्ट प्रीवियस जतिक थीम गुड़े अच्छी ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर एंड द ऑब्जेक्टिव इज अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ हार्ट डिजीज. Sir, आज आपण from a person who writes medicines and helps people understand तांकर एबे current स्थिति कोन अछि देहर through scans, आज आपण गुडाई behavioral changes बतैचंती for our viewers and जो माने भी वीडियो टी को देखिबे से माने एथरो डेफिनेटली बहुत गुडे जिंस बुझिया को पाइबे जे केमिति हम बॉडी रे बहुत जिंस रिलेटेड थाए केमिति जिंस गुडी को केयर न नेले से गुडी को बिगड़ी जाए एंड आपणकर टाइम मो अनुसार आई थिंक मोस्ट वैल्यूएबल एटलीस्ट इन दिस सिटी. सो से आपन को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मोर दैट आप निजर बहुत इंपोर्टेंट वैल्यूएबल टाइम काढ़े के हमको एते गुडे इनसाइट्स आज देचंती. थैंक यू सो मच सर. नमस्कार, धन्यवाद. सो ए वीडियो टी को लाइक करंतु, शेयर करंतु एंड डेफिनेटली निजर नियर एंड डियर वंस मन का संगे शेयर करंतु एंड देखा हबो हमर नेक्स्ट सेगमेंट रे. नमस्कार. नमस्कार.